everyone, this is Sapna and you guys are watching Beoriginal, Be Yourself, जहाँ मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस रिलेटेड टू फैशन, स्टाइलिंग एंड हेल्थ फिटनेस। सो आज का जो ये व्लॉग है इट इज़ ऑल अबाउट गेट रेडी विथ मी फॉर वैलेंटाइंस डे। सो आज के इस वीडियो में जो है मैं फुल मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ आपके लिए कि इस वैलेंटाइंस डे जो है आप किस तरह से रेडी होइए एंड प्लस दिस ड्रेस कॉम्बिनेशन। बेसिकली वैलेंटाइंस डे पे जो है वो रेड कलर की जो ड्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, बट द ट्रेंड्स आर चेंजिंग, है ना। वो जो रेड ड्रेस है वो कितने सालों से चली आ रही है। सो मैंने जो है पूरे ड्रेस को रेड ना करके थोड़ा सा जो है रेड का ट्विस्ट डाला है विथ माई लिपस्टिक, माई इयरिंग्स एंड दिस जैकेट विच इंक्लूड्स सम रेड कलर। रेस्ट मैंने इसे बैलेंस किया है येलो एंड इंडिगो कलर के साथ। ट्यूटोरियल के बाद जो है मैंने अपने इस पूरे ड्रेस का पूरा फुल लुक भी दिखाया है, सो मस्ट वॉच। And so I have already cleaned my face with Garnier micellar water and then I have applied the Ayur toner on my face. Next what I'm gonna do is moisturize my face. So for that I'm using this Vaseline petroleum jelly plus aloe vera gel. ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं, एक तो ये आपके फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं, प्लस साथ ही जो है ये प्राइमर का भी काम करते हैं, एक बेस का काम करते हैं। बेसिकली मैं जो है प्राइमर्स लगाना पसंद नहीं करती हूँ बिकॉज़ मैंने थोड़ी सी रिसर्च की इंटरनेट यूट्यूब वगैरह पे ही, एंड मैंने ये देखा कि जो प्राइमर्स आते हैं, जो कॉस्टली ब्रांडेड प्राइमर्स भी हैं, उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो आपके फेस को बहुत ज़्यादा अंदर से उस वक्त तो ठीक रखते हैं, बाद में जो है आपके फेस को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। इसलिए जो है मैं एलोवेरा जेल विच इज़ समहाउ नेचुरल एंड वैसलीन पेट्रोलियम जेली, ये भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे, इसमें कोई एडिशनल हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, तो इनको जो है मैं एज अ मॉइस्चराइज़र प्लस बेस अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ। जस्ट गिव अ जेंटल मसाज टू योर फेस। द नेक्स्ट आई विल अप्लाई दिस कंसीलर। बेसिकली कंसीलर्स जो है मैं इनर कॉर्नर्स पे, हल्का सा आईलिड्स पे एंड समहाउ नोज, या दैट्स इट। अब अपने फिंगर्स की हेल्प से जो है आप कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। नेक्स्ट आई एम गोना अप्लाई दिस Maybelline Fit Me फाउंडेशन ऑन माई फेस। Now with the help of a damp beauty blender I'm gonna blend my फाउंडेशन। और फाउंडेशन ब्लेंड करते वक्त दो चीज़ों का ख्याल रखना, एक तो आपका ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा सा वेट होना चाहिए, वरना और आप उसको जो है डैप डैप कीजिए, रब नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि सारा का सारा जो फाउंडेशन है वो आपकी ब्यूटी ब्लेंडर में चला जाता है, फेस पे कुछ दिखता ही नहीं है। एंड डैप डैप करने से जो है वो काफ़ी अच्छे से आपके फेस के साथ जो है फाउंडेशन सेट हो जाता है, और हल्का सा आपका ब्लेंडर गीला भी होना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट आई विल डू माई आई मेकअप। एंड क्योंकि मैं वैलेंटाइंस डे के लिए जो है वो मेकअप कर रही हूँ, सो वैलेंटाइंस डे में मैं जो है अपने लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क बोल्ड रेड रखने वाली हूँ, जिस वजह से जो है मैं आई मेकअप थोड़ा सा कम करूँगी। बिकॉज़ अगर आप दिस इज़ अ टिप, जब भी आप अपने लिपस्टिक्स ज़्यादा बोल्ड रखें तब जो है आप अपने बाकी मेकअप को थोड़ा सा लो रखें। इससे जो है वो पूरा जो आपका फेस ओवरऑल मेकअप है वो काफ़ी निखर के आता है। अगर आप आई जो भी है वो भी स्मोकी आइज़, डार्क स्मोकी आइज़, एंड उसके बाद लिपस्टिक भी डार्क रखेंगे तो वो लाइक खिचड़ी दिखेगी। सो ऑलवेज इन चीज़ का आप ख्याल रखिए कि। सो आई एम गोना अप्लाई द ट्रांजिशन शेड, दिस शेड ऑन माई eyelids. Next I'm going to apply this shade, this yellow shade, as this shade matches with my top color. And next I'm going to apply the eyeliner. Next I'm going to apply kajal.
The next is mascara. So I use Lakme 9 to 5 mascara. Always the direction of the mascara should be inside from outside. So that's enough for my eyes. Now I'll make my eyebrows with that Make Flower eyeliner gel. This is very, very good. I can use it like a kajal, a liner, or a eyebrow. If you think that shape अच्छे से नहीं आई है, so with the help of earbuds, put the shape below my cheek. So for my blush, I will be using this shade. So product on my fingers and like this. Dab, dab, and dab, and mix. So, and for the highlighter, this shade I'll be using above my blush like this. And just blend it. Little my nose. On my cupid. Okay, with that. So for my lipstick, I'll be using this Lakme 9 to 5 matte lipstick. It's bold red and it's just give a wow look to my full makeup. And I'm ready. Let me change my dress. Okay, so if you guys like the video, please give a big thumbs up to the video, subscribe to my channel, and share this video to your loved ones. If you are a boy, then I think you should share this video to your would-be, to your better half, ताकि वो इस Valentine's Day जो है बिल्कुल अच्छे से तैयार होके आपसे मिलने आए. And in advance, आज Rose Day है when I'm shooting this video, the first day of Valentine's Day. So I thought कि Valentine's week पे जो है एक Get Ready With Me जो है video बनाया जाए. So happy Valentine's Day to all the couples, to everyone. This Valentine's Day, just spread love to everyone, to your parents, to your teachers, to your friends, to your family, to your society. Just convey the message of love. Bye guys, love you all.